Hello बच्चों, welcome to the Spectrum Education. Today we will start with the new concept, with the new ideas, going through the mechanical properties of fluid. In this lecture we will study some important formulas which are very important and some important concepts which are very important for your MHT CET, JEE and NEET examinations. So this is the first part of the lesson. In this part we will study what do you mean by hydrostatics, the Pascal law, then the surface tension, surface energy and some important tricks and formulas related to this. So we will start our lecture. So अब ये जो fluid होता है, ये fluid, what do you mean by fluid? So in fluid we will take the study of gases as well as the liquids. Fluid means the substance that can flow. So we know that the gases can flow and also the liquid also can flow. So in fluid we will study entire physics regarding our gases and the liquids. So fluid means gases as well as liquid. So we will start our session. So first topic for the lecture is, in fluid mechanics we will study two things, hydrostatics as well as hydrodynamics. So what do you mean by hydrostatics? So hydrostatics means the study of fluids at rest, the fluids which are stationary, and if we study the physics of that stationary state of the fluid, then we will call it as a hydrostatic. And what do you mean by hydrodynamics? The study of fluids in motion. So both the studies are different and both things are important. So we will start to study the hydrostatic. So in hydrostatic, if consider some container and take some fluid in it. So consider any liquid in that container. Now we know that the container is at rest and that's why our fluid is also at that rest. Now if I have to find some pressure exerted by some liquid column. So imagine some liquid column in that fluid. So this is our imagination. This column is our imagination and we have to find the pressure due to that column only. Not entire fluid, only that column only. Now, first thing, we know that the fluid is at rest. Fluid is not moving. In that container, fluid is at rest. And consider some imaginary column in that and we have to find the pressure exerted by that liquid column. Now, in that, suppose if L is the, or if H is the height of that liquid column. So consider H is the height of that liquid column. This cross sectional area of that liquid column is capital A. Let us consider that thing. And if this fluid has the density rho, so rho is the density of fluid, then in that container there is some amount of fluid. Okay, so gravitational force acts on this and due to gravity there is the force which acts normally downwards and this is mg. So m is the mass of that liquid column. So the mass of liquid column, let's say m, g is the gravitational acceleration, so we will get this force mg. Okay, so this is the force. Now, basically, we know that the pressure, so force equals to what? So, do you know the relationship between the force and the pressure? So, pressure is nothing but the force per unit area. Okay, so pressure equals to, so this P equals to force per unit area. Now, what do you mean by force? Now, in that thing, in that physics, we can get the force equals to mg. Only gravitational pull is acting on that liquid column, nothing else. And the fluid is at rest already. So we will take F equals to mg upon A. So this is our pressure. Okay. Now
uh, convert that mass term in terms of the density of fluid, because naturally we will get the density of fluid. We can't measure some mass of the fluid because this container is an imaginary container, and how to measure that mass? So basically we will convert it into the density of liquid. So basically you know that this thing, so density equals to mass upon volume, then mass equals to density into volume. So density, volume, so volume of this imaginary cylinder is, you know that, pi r square into height. Height is h, so height is h. So A is the area, so pi r square. So let's say R is the radius of that imaginary container. So put the things right here. M is rho pi r square h into that G, and area is pi r square. In that pi r square get cancelled. You will get rho h G. So pressure exerted by the liquid column is h rho G, where h is the height of liquid column, G is the gravitational acceleration, and rho is the density of liquid, that fluid. ओके, सो ये जो फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, because in CET you will ask many questions regarding this. So this formula is very very important. Moving towards the next question and moving towards the next slide. So there is a law that Pascal, that scientist Pascal had given us regarding the stationary fluid. So this law is only for stationary fluid. Stationary fluid. So the law states that if consider some fluid, some enclosed fluid. So enclosed, the fluid must be enclosed fluid, and the fluid must be stationary. If the pressure acts at any point, suppose यहाँ इस मॉलिक्यूल पर मैंने कुछ प्रेशर एक्ट किया है, okay, so this is entire filled with that fluid, so fluid everywhere, full fluid, and if the pressure acts on any point, at any point in that enclosed fluid, if suppose the pressure acting is P, then the Pascal stated that this pressure is equally transmitted to every other particles. वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हर एक पार्टिकल को ट्रांसफर किया जाता है विदाउट डिमिनाइजिंग. सो जो प्रेशर है वो डिमिनिश नहीं होगा, यानी वो कम नहीं होगा. जितना प्रेशर मैंने एक पार्टिकल पर अप्लाई किया है उतना ही प्रेशर हर एक पार्टिकल पर क्या होता है, अप्लाई होता है. एंड ऑल्सो दैट प्रेशर एक्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर के वजह से वो फ्लूइड हमने एनक्लोज किया है उस कंटेनर्स की जो वॉल्स है, ये वॉल्स पर भी उतना ही प्रेशर लगता है. So this is what Pascal's law. So the Pascal's law stated that if some amount of pressure acts on at a single point or single molecule on an enclosed fluid and the fluid is at rest, then that pressure is transmitted equally and undiminished to every other particle of that fluid and also on the walls of the container. That's nothing but the Pascal's law. Now we will take some application, daily life application of that Pascal law. Consider the example of hydraulic lift. So consider two containers and both the containers are filled with the water, or both the containers are filled with some fluid. We don't know what type of fluid it is. Let us consider two pistons here, one or two plates, this one and this one. Let us consider the area of this plate is A1, area of this plate is A2. Simply we can see that A2 is greater than A1. So area of that plate is always greater than area of that first plate. You can see in the figure. Let us consider if we apply force F1 on this first piston, then what will happen? So as you know, if we apply force on this piston,
this piston goes downwards, some fluid get transferred to this container, and this container will up by some force F2. Okay, so as this fluid is enclosed fluid and this enclosed fluid in some container and the fluid is at rest, then we can apply the Pascal law. So pressure at this point must be equal to the pressure at this point, that Pascal law stated us. So pressure at this point is P1 equals to pressure on this side is P2, and the pressure is what? Force per unit area. So F1 upon A1 equals to what? F2 upon A2. So from that thing we can find value of F2. So F2 equals to A2 upon A1 into F1. As you know, A2 is greater than 1. So A2 upon A1 is also greater than 1. So this quantity is greater than 1. So quantity which is greater than 1 multiplied by force F1. Similarly, this gives us F2 is greater than F1. That means if we apply little most pressure, little most force on one side, we will get large force on other side. So this is the example of hydraulic lift. If suppose you have to park some car here in your parking, so in city you can see there are parkings in floors. So एक फ्लोर होता है, फिर अगला फ्लोर होता है, अगला फ्लोर होता है, और हमें वहां कार क्या करना होती है? पार्क करना होती है. So they have some machineries like this. So वो क्या करते हैं? एक बटन नॉब प्रेस करते, वहां से एक स्मॉल फोर्स लगता है, बट वो स्मॉल फोर्स लार्ज फोर्स रेडी करता है, और वो जो इतना फ्लोर होता है उतना फोर्स लगता है, बट प्रेशर तो सेम ही रहेगा, तो उतना फोर्स लगता है, और जो कार है वो लिफ्ट की जाती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट based on the principle of Pascal's law. Moving towards the next thing, we will take the next thing, that is what do you mean by surface tension. अब ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का हम स्टडी कर रहे हैं, और इनिशियली ये फ्लूइड हमने कंटेनर में लेकर रखा है, और वो कंटेनर में वो जो फ्लूइड है एट रेस्ट है. ओके, सो द फ्लूइड इज एट रेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स. नाउ अब ये जो फ्लूइड है, there are too much particles, and these particles have two types of forces. The force is cohesive force and adhesive force. अब ये cohesive force क्या होता है? The intermolecular force of attraction between the particles of the same type, same substance, वो होता है cohesive force. और adhesive force होता है the intermolecular force of attraction between the particles of some different types. यानी अगर ये कंटेनर ग्लास वाला कंटेनर है, तो ये ग्लास एंड ये वाटर का जो पार्टिकल है, इन दोनों अलग डिफरेंट पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है अडेसिव फोर्स. एंड अगर ये वाटर है, उसके साइड वाला वाटर का ही पार्टिकल है, सो सेम पार्टिकल है, उसमें जो फोर्स होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स. सो कंसीडर, मैं एक लिक्विड कॉलम कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पर. सो यहां तक हमारा लिक्विड है. सो अब ये फोर्स कैसे किया जाता है? सपोज ये मॉलिक्यूल है, सम मॉलिक्यूल. अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ये मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां से भी इक्वल कोहेसिव फोर्स लग रहा है, नीचे से भी इक्वल कोहेसिव फोर्स लग रहा है, हर तरफ से कोहेसिव फोर्स अगर उसे इक्वल लगता है तो वो मॉलिक्यूल वही रहेगा. सो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं. सो कंसीडर दिस मॉलिक्यूल. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय, so this is small molecule only. So this pair is pair of influence. Okay, so this small molecule is surrounded by large number of water molecules only. Okay, so there must be the force of cohesion from all sides like this, and each force cancel each other, so there is no net motion of that particle, so no net force on that particle. But consider दिस सरफेस पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है जो एक एग्जैक्टली सरफेस पर है. अब यहां क्या होता है? ये जो कोहेसिव फोर्स है वो नीचे ही लगेगा. ओके, ऊपर तो एयर आता है, बट एयर एंड वाटर में जो फोर्स है वो अडेसिव फोर्स है. वो अडेसिव फोर्स बहुत कम है, बट वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है. तो ये पार्टिकल्स पे नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लगता है.
सो जो ऊपर वाला पार्टिकल है उस पे नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लगता है एंड दिस पार्टिकल ट्राइज टू गो इनसाइड द लिक्विड और इनसाइड दैट कंटेनर। उसके साथ साथ अगर वो लिक्विड सरफेस के आसपास वाले में पार्टिकल लू जस्ट, वो पार्टिकल पे भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ही लगता है क्योंकि ऊपर थोड़ा एयर आता है, सो एयर वाला एडहेसिव फोर्स कम होता है और ये कोहेसिव फोर्स लग के ये भी पार्टिकल नीचे जाने की सोच रहा है। सो बेसिकली देयर इज नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल्स। सो मैं देख रहा हूं कि ये जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और वो सब पार्टिकल्स नीचे जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सरफेस पे के पार्टिकल और सरफेस के जस्ट पास वाले पार्टिकल्स भी नीचे जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो अगर एक पार्टिकल नीचे जाता है तो सरफेस का एरिया डिक्रीज होगा, लेकिन सरफेस को एरिया भी डिक्रीज नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई द सरफेस इज अंडर सम टेंशन। सो अब हर एक पार्टिकल नीचे जाने की सोच रहा है, राइट? हर एक पार्टिकल नीचे जाने की सोच रहा है, तो वो जो सरफेस है वो एक टेंशन पर आता है। सो सम टेंशन एक्ट्स ऑन दैट सरफेस एंड दैट टेंशन इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सो इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन है, इसको मैथमेटिकली हमें फॉर्मुलेट करना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन लगेगा कि कितना सरफेस टेंशन है हर चीज का। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस सरफेस टेंशन? So let us consider this is what front upper view of some liquid. So मैंने एक बीकर लिया है और एक कंटेनर लिया है, उसमें लिक्विड है और मैं देख रहा हूँ लिक्विड ऐसे सर्कुलर मुझे दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला फ्रंट व्यू, ऊपर से टॉप व्यू है, नॉट फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू। ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो ये फ्लूइड है। ओके, लेट अस कंसीडर सम इमेजिनरी लाइन PQ ऑन दैट सरफेस। एक इमेजिनरी लाइन मैंने कंसीडर की, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये जो फ्लूइड है, ये जो अपर सरफेस है वो सम स्ट्रेच होने के लिए देख रहा है। क्यों? क्योंकि सम टेंशन है, क्योंकि ये पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा, लेकिन वाटर को होल नहीं दिखाना है तो वो क्या करेगा, आसपास के पार्टिकल को स्ट्रेच करेगा। सो सिमिलरली यहाँ पर कुछ स्ट्रेचिंग दिख रही है। सो मैंने क्या देखा कि अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उस अपर सरफेस पे, तो हम देख सकते हैं सम देयर इज सम टेंजेंशियल फोर्स। ओके, सम टेंजेंशियल फोर्स, that force is such that the molecules are trying to accommodate in all the area and try to that complete that area. So ये जो टेंशन यहाँ पर एक्ट हो रहा है, these are some normal forces. So वो लाइन पर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जो उस सरफेस को स्ट्रेच कर रहे हैं। So this is what the surface tension. So we can define the surface tension as, so basically the surface tension is represented by capital letter T. So the surface tension is tangential force acting on some imaginary line drawn on that upper surface. The force per unit length. So this is the entire force acting on some imaginary line. So that's what the surface tension. वो लाइन पर कितना टेंशन है, so वो लाइन पर जितना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेचिंग फोर्स है। So force per unit length, that is nothing but the surface tension. Now the SI unit, you can get the SI unit of the surface tension is at Newton per meter, and you can find the dimensions. So dimension is surface tension का dimension, that means force वाला dimension upon length वाला dimension, and force वाला dimension 1 minus 2 होता है और length का dimension 1 होता है। So surface tension वाला dimension क्या आ जाता है, so m1 l0 t minus 2, these are the dimensions of surface tension. So surface tension is basically force per unit length. और एक प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, एंड दैट इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ सरफेस। सो सरफेस एनर्जी, सो बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल नीचे जाने की सोच रहा है। सो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कुछ टेंशन में आया है और उससे कुछ एनर्जी है। सो हर एक पार्टिकल जो नीचे जाकर बैठा है उसको कोई भी एनर्जी नहीं, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज जीरो,
बिकॉज वो नीचे जाकर बैठे। लेकिन जो पार्टिकल ऊपर सरफेस पे है, दे हैव सम एक्स्ट्रा energy, some potential energy, and that energy is nothing but the surface energy. So what I have written here, the amount of work done, because energy is nothing but the work done, the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at constant temperature. The work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at constant temperature is called as surface energy. Because every particle tries to go inside. Okay, so every particle tries to go inside. अब क्या होगा, अब वो सरफेस स्ट्रेच होगा। अब अगर सब पार्टिकल नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा फ्लूइड का? सो वैसे होता है क्या? नहीं, वी कांट इमेजिन फ्लूइड लाइक दैट कि सब पार्टिकल नीचे चले। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो फिर से नेक्स्ट सरफेस आ जाता है। सो फिर अब क्या होगा, molecules from inside gain some energy and they appear on the top and they have some maximum energy than that bottom wala energy. So they have some maximum energy and this energy is called as surface wala energy. So surface energy. So basically work done equals to surface tension into area. So work done equals to surface tension into area. So W equals to T into area, change in area. And the surface tension can also be written as surface tension equals to work done per unit area. So जो वो fin वाला surface tension है, that is nothing but the work done per unit area. So work done per unit area is nothing but the surface tension. Okay, so surface energy यानी what? Surface tension into area, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. If suppose I have taken some example, that example I will repeat in next session also, but for the case let us take some example. If you have asked some example like consider some drop, or yes, consider some drop. So you have this drop and drop has a radius r. Okay, so drop has radius r. So work done is what? So work done is surface tension into area. अब surface का है, ऊपर है surface tension. So we have to take this surface area. So for sphere the surface area is what? 4 pi r square. So this is the work done. That is potential energy. Okay. So application of this surface energy and surface tension we will take in the next lecture, in the next session. Try to revise all the things that I have taken in this lecture. We will continue with some formalism and interesting examples on the topic based on these things in the next session. Okay, so thank you.